Jai Hind friends, today we welcome you all in this episode of Kargil series for 2021. And today we will listen to the parents of Captain Jintu Gogoi of 17 Garhwal. Captain Jintu was born in Khumtai, a small town in Golaghat district of Assam, son of honorary flying officer Togiram and IAF veteran Captain Gogoi had a sister Luna. Captain Jintu Gogoi was commissioned into 17 Garhwal of the Garhwal Rifles, one of the most decorated regiments of Indian Army. During 1999, his unit was deployed in J&K area, and when the Kargil war broke out, he was recalled from League to join his unit just 12 days after his engagement. And today we will listen from parents of Captain Jintu Gogoi. And uncle and auntie today they will narrate us the childhood stories, the making of an officer to us. अंकल नमस्ते. नमस्ते. आंटी नमस्ते. नमस्ते. आज आप दोनों ने हमें समय दिया है, हमारे इस वार्तालाप पर आए हैं, इसलिए थैंक यू सो मच. और हम आपसे कैप्टन जिंटू गोगोई के बचपन के बारे में सुनेंगे, उनकी चाइल्डहुड, स्कूल डेज, इनके बारे में आप जरा हमें बताइए. Actually, he was very energetic, or he was maximum inclined to the army side, and right from beginning, we could not imagine about his career, but then he was maximum inclined to that gun. If this one small that is a wooden plant, if he gets, he generally he'd always draw a gun, that gun I have to cut it. And he was very much fond of that gun. And generally he goes to the bushes, hide himself, and he try to fire. But then we were never knowing that in future he will be joining in army. In the school time, he was very much confined to his friends. He was liking his friends so much. And as a matter of fact, whatever he has taken, he took it very seriously. He was a good drawing. He has gone maximum times to the drawing competitions, and maximum the prizes also he has won. And from childhood onwards, he was, of course, but then we never knew that he will be joining in army in future. Thereafter, of course, since I was there in Indian Air Force, so we had to go different places on posting. And I reached Madras. There he has joined in this one NCC. So, and in the school NCC he has joined, and he has got the rank up to the Havildar, and thereafter he has stopped it. And from Madras I came back to Ambala Kent, and Ambala Kent again generally I stayed about 6 years plus in any station. And finally, we have left him there in Ambala itself, where he was studying his graduation in Gandhi National Memorial College, Ambala. And after completion of his graduation, finally he has gone to Kurukshetra University. And there he has taken up that MSW, Master in Social Works. This is his school life and college life.
So he must be inspired by you, uncle, since you were also in forces. So you inspired him a lot to join armed forces. Yeah. Of course, one thing is that I had particularly I have not inspired to join him army, but then he has seen the discipline. Yes. The discipline what I was maintaining, he has seen it and he was very much inclined to the discipline. And really, without discipline, we cannot run. Army, Navy, and Air Force, we have to have maximum discipline. So I was one of the most disciplined men. So you must be very strict in childhood to them, to your kids. Yeah, of course, not that strict, but then Discipline. whatever you do it properly, and whatever you do the things which can give you the result. So that was the way of advising them, and they have come up to the particular standard, no doubt. I have got two daughters. Elder daughter, she's a school teacher here in DPS Namoligar. She has completed her MA in Geography and B.Ed. My younger daughter, Gitali, you know, she has completed her M.Com from Dibrugarh University. She's a housewife now. अंकल कैप्टन गॉगोई ने जो 17 गारवाल उन्होंने मतलब सिलेक्ट किया था अपने लिए, इसके पीछे कोई रीजन था मतलब गारवाल राइफल्स में जाने के लिए? Actually, before completion of his this one MSW, he has appeared this one that is the Combined Defence Services Examination. In Chandigarh, he has appeared and he has cleared the examination, and he has been called for SSB, Service Selection Board, to Bhopal. And Bhopal, he was selected. From there only, he has gone to, that is Madras, that is Officers Training Academy. That time it was, of course, Officers Training School. Now it is Defense, that is Officers Training Academy, Madras. So there he has completed his complete training for 1 year. And from there only, he was posted to 17 Garhwal Rifles. आंटी, he was naughty in childhood. वो बचपन में naughty था या फिर शांत था? आपको परेशान करता था? जब छोटा था तब तो बहुत इतना नोटी नहीं था, थोड़ा बहुत अच्छा ही है, मेरा बात बहुत सुन रहा है, अभी ज्यादा बदमाशी भी नहीं किया था। अच्छा। कैप्टन गोगोई was eldest among all the siblings. वो भाई बहन में बड़े थे सबसे? No, he was the second one. My elder daughter, then Captain Jintu Gogoi, then the third one is the younger daughter. और अंकल वो आप सबके साथ जो मतलब ओटीए की ट्रेनिंग पीरियड है, उसके बाद जब वो पोस्टिंग उनका शुरू हुआ तो कुछ मेमोरीज ऐसा उन्होंने कुछ शेयर किया था जम्मू कश्मीर के या वहाँ के कुछ? ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, but ऐसा है, we have encouraged him in all cases, and we have been telling him one thing, that he should not worry maximum to the home side, since I am available and both the sisters are available, so he should not worry much about the home. And since he has got the posting to 17 Garhwal Rifles, he has first took up the challenge to learn the language. He was very much fond of that language, and he was as a non-Garhwali, he used to speak fluent Garhwalis, and that is one of the reasons that he was loved by all the men from the Garhwal Rifles.
And what we have heard about from his friends, that he used to share his food with everybody. It is not that only officers. He used to share his food from the all Jawans also. So that is one of the reasons that all Jawans also know about him. Adrija, I think you are muted. That's why he could connect very easily to the Jawans, because Yeah. he adopted their culture so well. Yes, that is correct. Yes. आंटी, भाई बहन लड़ाई करते थे? लड़ाई नहीं हुआ, तब तो कभी कभी दीदी के साथ लड़ाई होता है। फिर दीदी थोड़ा जोर से बोलने से वो तो बोलता नहीं है, फिर मैं भी बोलती हूँ ऐसे बोलना नहीं सही है, दीदी है ना, बड़ी है थोड़े से, इसलिए बहुत मानते रहे, जो बोलूंगी वो मान लेता है। और छोटी बहन के लिए तो बहुत प्रोटेक्टिव होगा। छोटी बहन के साथ तो बहुत लड़ते थे, लड़ाई हुआ था दोनों। जब बड़ा हो गया दोनों, तब वो एक साथ हो गया दोनों। कितना डिफरेंस है अंकल भाई बहन में? It is that is first daughter and son. They've got 2.5 years, and third one about 6 years. ओके। और वो जहाँ पे पोस्टिंग होते थे, वो लेटर्स लिखते थे आप लोगों को? Yeah. Of course, that time we did not have any mobile or telephone connections, and wherever he has gone on posting, I used to get the letters from him. Plus, we also used to write the letters. That communication was there, no doubt, and of course, they are getting very less number of days on leave, and whenever he comes for a short period, about 20 days or 30 days, and he enjoys with his friends at home and in my village, and maximum inclined to the games and all. He used to go to the football field and collect all his friends, and he used to give the description about army, and he was very much trying. That he told also maximum his friends that after coming back to Jorhat side, he will try to put them in the army. But it was the destiny that he could not do that one. अंकल, जब कारगिल वॉर के टाइम आप लोगों को कोई लेटर उन्होंने लिखा था कि लड़ाई, क्योंकि आफ्टर 71 वो फर्स्ट लड़ाई थी, तो इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर द ऑफिसर्स हु फेस्ड दैट वॉर कारगिल के टाइम में। तो कोई लेटर उन्होंने वो आपको लिखा था वहां से कि लड़ाई के माहौल क्या है, वहां क्या चल रहा है? नो बेटा, ऐसा नहीं है कि he has not written about the war front, but as it is, as he have told that after his ring ceremony, he has been called to the Kargil, and that time his battalion was at Pithoragarh, so he could not go to Pithoragarh. From Delhi itself, he was picked up to Kargil, and after departure from Delhi, he wrote a letter from somewhere in the Kargil front. So that was written on just about 10 days before that he has been in the front. And generally, they cannot mention about the front of what is going on. No. So that letter also I have received on 2nd of July. As a matter of fact, they have already gone to the war front, and it so happened that before calling to Kargil, this battalion was there in the Kiran sector. So from Kiran sector only, about 6 months earlier,
they went to Pithoragarh, and as a matter of fact, they were completely acclimatized in the Kiran sector, and that is one of the reasons that they have been called to the hills, and they were put to erect the Kalapathar hills. Yes, yes. And so they could not write any letters and all. We have been seeing in the this one that Kargil war was going on, and we have been seeing in the news and the TVs. So finally, I wrote a letter to my district deputy commissioner that please provide me one telephone, landline telephone, since my son has gone to the war front, and I do not know his whereabouts. And of course, DC has received the letter, but he could not give me. And last letter I have received on 2nd of July. And 2nd of July only we came to 2nd of July only we came to know that he was killed in the Kalapathar on 30th of June. Yes. And there before we were not knowing anything about his whereabouts. And that same day, on same day, that is on 2nd only, that is army, that is brigade commander from 41 sub area. They came to inform us that Captain Jintu Gogoi has been killed in the war, and but then till then we were not knowing about his whereabouts. And at the same day, DC also came in the evening hours. And as a matter of fact, the war front position is not known to us. Since he was killed, his dead body was fallen towards the front line, that is beyond the front line, and it was they could not recover it. And on 9th of July, Honorable Prime Minister that time, Bajpai Dangaria, he came to NRL for inauguration, and from the district authority, we have been brought to him, and he has had a talk with us. तो प्राइम मिनिस्टर asked me आपको क्या चाहिए, तो मैं बोला उसको कि मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटा का डेड बॉडी जल्दी हो सके तो मेरे को ले आके दे दीजिए. That is the words we have spoken with then Prime Minister Bajpai Dangaria. And thereafter I did not talk anything about, but then he has told clearly that you give me 3 days time. So that was 9th of July. 10, 11, 12 night, somewhere 10:30, I have received a call from the Army headquarters Shillong stating that Captain Jintu Gogoi's dead body has been recovered. Very nice. Very nice. So that was on 12th, and his body was taken to Leh. On 13th, they were there in the Leh. 14th, he was brought to Delhi cantonment. 15th, he was brought to Guwahati and Jorhat, and we have received him at home in the night, 9 o'clock. Of course, we have gone to Jorhat also to receive his dead body. And on 16th, next day, we have cremated at home. Uncle, meanwhile, Kush Bhargava and Bhavna Salaria ma'am has written ki, I feel so privileged to meet Captain Jintu Gogoi when he came to Lansdowne for orientation before joining Garhwal, 17 Garhwal. So Bhavna Salaria ma'am is listening to your interview, and she said ki she met Captain Jintu Gogoi before he joined the 17 Garhwal in Lansdowne. Okay. So nice. Thank you, Bhavna ji. So uncle, आप भी फौज में थे, वो भी फौज में थे, तो आप दोनों के बीच में मतलब आप उनको गाइड करते थे, आप दोनों के बीच में ऑफिशियल मतलब बातें होती थी?
आप उनको गाइडेंस देते थे, डिस्कशंस होती थी? Of course, actually, when he has asked me, Papa, you want to join in army? But then I was telling him, why don't you join in Air Force? So he told me that, no, Papa, I don't want to join in Air Force because there is no thrill in Air Force. So he want to join He in army. wanted action with his guns. Yeah. He wanted to join in army only because the army has got some training. And no doubt, because of this only, I think he has been selected in the infantry division. True. Uh, And he was very infantry active, no doubt. always, Yeah, they are infantry always in the always front. faces the first Yeah, yeah, phase yeah. of the war. So obviously That is in there the, is some added thrill in the life. yeah, that is always in the forefront. Yes. Uncle, how he prepared for his admission in army, CDS? How he prepared himself? Actually, beta ऐसा है, we have posted to Gorakhpur, and when he was in the second year of graduation in GMN college, that was the time I have posted to Gorakhpur, and complete family we have moved to Gorakhpur, living him at Ambala Kent itself. So he stayed in one of the hostels, and thereafter he has completed his graduation from GMN college, and he opted to join in Kurukshetra University. So we have given him okay, and he has gone to Kurukshetra University, and I have given him all the privileges, whatever he needs. And he stayed in the hostel in the Kurukshetra University. I have visited 2-3 times to Kurukshetra University hostel also, and they were very happy. But whosoever he has got his friends, they were very happy. But some people he was telling that they were very much against of them because they were studying time and again. They are पूरा रात रात पढ़ते हैं इन लोग, तो इन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करता है. I think you'll be knowing better because they are always disturbed. Those students, those who are trying to study little hard, other Yes. people they don't like it. And anyway, during stay in Kurukshetra, he has opted for joining in army. So I was telling him, you please complete your postgraduate, and then you go for the defense. And he has appeared as CDS, and finally he has passed, and he was called for interview in Chandigarh. So Chandigarh also he has cleared. Then he was called to Bhopal for SSB. So that I was not knowing, of course. Only my elder daughter was knowing it, that he has been called to Bhopal. On back from Bhopal only, I came to know that he has been selected to army. Anyway, complete family was happy that he will be joining as an officer, and he will be going for training to the Madras. I was busy for preparing his all belongings, and it was a good time. And as a matter of fact, that has enhanced our further our prosperity. And on his passing out, POP day, we have reached there. We were there. On the peeping ceremony, we were there. And other officers also, they were very happy that Captain Jintu Gogoi's parents have come. Because he was very fond of other friends in the training center. Captain Jintu Gogoi was known to maximum people there. And he was a boxer also. In the boxing competition also, he was a champion. Adrija, I think someone has written that he or she met Captain Gogoi. Yes. And Yes. yes.
Uncle, someone written Captain Gogoi had come home to call my father, as my father is from Garhwal Rifles too. Captain Oh. Jean Gogoi had amazing sense of humor and a very jovial and a positive person. That Okay. evening was full of laughter. Sir, indebted to you and ma'am for giving this nation a brave heart. Thank you, thank you. आंटी, अभी आप कुछ बोलिए, कैप्टन गोगोई को खाने में क्या पसंद था, वो मतलब बचपन से कैसे पढ़ा करते थे, थोड़ा आप बताइए अभी। वो तो खाने के लिए जो इसको मीट चाहिए, चिकन, मटन, फिर दूसरा सब्जी अगर जो मैं बनाऊंगी सब खा लेता है। कोई मुश्किल नहीं है, जो बनाऊंगी जैसे ही हो, नमक है कि नहीं इसे खा लेता है। इसीलिए खाने के टाइम इसको कोई डिस्टर्ब नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं किया, अच्छा लगा। और बचपन में वो मतलब स्कूल में, जब स्कूल में थे तो अपना पढ़ाई कर लेते थे? पढ़ाई तो किया डांटना था, था। जितना टाइम पढ़ेगा, कभी मैं बोलती हूँ, मेरा बात को बहुत मानता था, फिर इसलिए मैं जो बोलूंगी, मैं बोलती हूँ कभी 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ेगा, उसका सब ज्यादा नहीं पढ़ेगा, इतने पढ़ के बस खेलने के लिए चले जाएगा। ऐसा है, आने के बाद कुछ खाने के लिए चाहिए उसको। फिर वो बॉडी बिल्डर में था, उसको खाने के लिए बहुत चाहिए था, जो मिलेगा वही खा लेता, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं। You are the bodybuilder. You are the bodybuilder, and he has attended Mr. University in the Kurukshetra University. Oh. Wow. Oh. So his food was very heavy, of course. Protein diet. Yeah. और दीदी और बहन के साथ कोई लड़ाई? हाँ, वो ये लोग खुद ही बोलेगा। दीदी बोलेगा अपने बिल्कुल। बड़ी दीदी है बोल रहा बड़ी दीदी है, गीता भी है, दोनों बोलेगा। हाँ। लो माला। Hello दीदी। Hello दीदी। Hi. नमस्ते दीदी। नमस्ते। Hi अद्रिजा। Hi नमस्ते। दीदी। अनुसुईया जी नमस्ते। दीदी आप दोनों थोड़ा मेमोरीज शेयर कीजिए कैप्टन जिंटू गोगोई के साथ। First of all, thank you so much for for highlighting the Kargil heroes and talking to the parents. ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी नो डाउट कारगिल वॉर एक ऐसा वॉर था जहाँ पर हम लोगों ने बहुत यूथ को अपने सैक्रिफाइस करवाया है, उन्होंने दिया है, और काफी लंबा समय हो चुका है जहाँ पर लोग भूल चुके होंगे, but thank you for keeping it alive. That's the best part of what you people are doing. So first, that is the gratitude right from the heart we are Thank you, saying. Thank you so much. Thank you so much for this. Thank you, Didi. Thank you. This privilege you are giving to our parents and keeping the memories of it's not only Captain Jintu Gogoi but all the Kargil heroes who have sacrificed their They're lives. always in our heart, Didi. Yes. Yeah, thank you so much. Because this is something like, no doubt, we are very proud as sisters. And we are very proud that he has brought a laurel to the family. ये बहुत अच्छा है कि मतलब पूरे हमारे भी जैसे गांव में कहीं पर भी बोलते हैं कि कैप्टन जिंटू गोगोई के घर के हैं, तो फिर उनके लिए ना हाँ हम जानते हैं, हम आए थे वो मिलने के लिए, वो एक अलग सा मतलब आपका एक फीलिंग होता है उस समय। एंड नो डाउट, क्योंकि भाई और मेरे में बहुत ज्यादा मतलब गैप नहीं था, सो वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एक्चुअली। एंड गीताली के साथ थोड़ा सा उसका 36 का आंकड़ा हुआ करता था, तो काफी झगड़ा रहता था दोनों के बीच में, बट आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बड़े हुए, आई थिंक दैट फेज वो जो गैप है वो समझ में भी आया। एंड आई थिंक सो आफ्टर ही वेंट फॉर हिज ट्रेनिंग एंड ऑल, वो थोड़ा सा एक गैप हो जाता है, जो डिस्टेंस होता है ना, मेरे ख्याल से जितनी दूरी होती है उतना ही बीच में आप लोग जो होता है प्यार बढ़ता है।
तो मेरे ख्याल से वही चीजें हैं। एंड काफी जब भी आता था छुट्टी पर काफी अच्छा लगता था हम लोग को, क्योंकि बहुत सारी बातें शेयर करता था, रात को बैठ बैठ कर हम लोग को सुनाता था अपनी गढ़वाली गाने, कहीं से वो सीख कर आता था वो अपने रेजिमेंट से। एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर कि दीदी सुन, मैं गढ़वाली गाना सुनकर सीख कर आया हूँ, पता है। एंड मतलब बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब नॉन गढ़वाली होने के बावजूद भी he has माने he tried to basically get into the whole system of the Garhwalis, and खाना पीना भी उनका सिस्टम वो सब पूरा सीख गया था। So he used to be very fond of the Garhwali food, and he used to be, वो गढ़वाली रस्सी होती है ना जो मतलब वो लोग जो पहनते थे, तो he used to be proudly saying that। तो मेरे ख्याल से हम लोग मतलब जितने भी जब तक हम लोग साथ में थे, हम लोग गोरखपुर क्या अम्बाला कैंट तक एक साथ ही थे, एक ही साथ में। पर जब गोरखपुर पापा पोस्टिंग पर आ गए तो वो फिर उधर ही रह गया था। उसके बाद से हम लोग थोड़े से मतलब हम लोग का डिस्टेंस एक हो गया था, मतलब वही डिस्टेंस इन द सेंस ऑफ बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो वही है। तो गीताली बताएगी अपना अपना वो लड़ाई, दीदी आप लड़ाई सुनाएंगे। हम लोग तो मतलब बहुत लड़ाई करते थे इस पर, छोटी छोटी चीजों के लिए, पेंसिल इरेजर। इवन एक बार हुआ था कि वो मतलब वो मेरे को अभी तक याद है, बट बहुत छोटी थी, पर मुझे याद है कि वो रानी लक्ष्मीबाई की अपनी पोयम याद कर रहा था। उसका नेक्स्ट डे हिंदी का टेस्ट था और वो बार बार रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बार बार उसको कह रहा था। मैं उसके पीछे पीछे रिपीट कर रही थी और उसको इतना गुस्सा आया कि वो मेरे पीछे दौड़ा और मैं भी एकदम उसकी कॉपी वॉपी सब मैंने उस दिन उसकी फाड़ दी थी, क्योंकि इतना गुस्सा आया था कि वो भी मेरे को मार रहा था और हम दोनों की मतलब खूब लड़ाई हुई थी। दैट वाज वन ऑफ द विविड, मतलब वो मेरे मेमोरीज में हमेशा ही रहेगा। बट बाकी उसके बाद भी ये था कि बहुत छोटी छोटी बातों पे हम लोग लड़ते थे। लेकिन जब अम्बाला के बाद वो गोरखपुर में छुट्टियों के लिए आता था, तो हम लोग तब क्वार्टर्स में कभी कभी लाइट जाता था, तो हम लोग सब बैठ करके अंताक्षरी खेलते थे उसके साथ में। हम लोग रात रात में लाइट्स ऑफ रहती थी, एक कैंडल जलता था, वो टेबल पे बजाता था और मैं गाती थी उसके साथ साथ में। सो What a lovely memory. यस ऑफ कोर्स, यही मेमोरीज हम लोग के साथ में हमेशा रहेंगी। मेरे को सबसे कम टाइम मिला उसके साथ में, मैं हमेशा मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा। लेकिन जो भी है, बट उसके साथ में जितना भी टाइम बिताया, जितना वक्त उसके साथ में रहे हम लोग, वो हमेशा हम लोग के जहन में रहेगा। एंड आई होप आप लोग जितने कारगिल शहीद के फैमिलीज के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से सबके घरों में सबकी यादें होंगी उनके अपने साथ में, और उसी तरह से वो लोग हिम्मत ना हारे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। और आपके शो के थ्रू वो लोग जितने भी नए बच्चे अभी आए हैं, जितने भी नौजवान हैं, उन लोगों को एटलीस्ट उसमें से जितने भी हो सके वो हमारे देश के लिए आर्मी में ज्वाइन करें, डिफेंस में ज्वाइन करें, नॉट ओनली आर्मी, हर तरह के डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें ज्वाइन करें, और दूसरों को भी इंस्पायर करें ज्वाइन करने के लिए। दीदी जब वो छुट्टी में घर आते थे तो पूरे मतलब he was an inspiration to the entire village. तो सारे गांव के बच्चे भी He was the limelight, you can say। मैंने जो होता है ना कभी कभी जैसे एक दिया के जब दिया जलता है सारे इंसेक्ट उसी के चारों तरफ, उस हम लोग का हाल भी वैसे ही था। तो जब भी वो आता था एक गाँव में अलग से रौनक होता था, क्योंकि वो सबसे बात करता था। ऐसा नहीं कि वो घर में आया तो छुट्टी पे चुपचाप बैठा है घर में, ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी जैसे मिले लोग उन सबसे मतलब वो बातें करता रहता है। तो इसीलिए वही बात अच्छी है उसका। मतलब एक चीज ये है कि उसने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं आर्मी में क्या हूँ, आई एम एन ऑफिसर। ही वाज ऑलवेज डाउन टू अर्थ, जो चीज मेरे ख्याल से हम सबको याद रखना है, क्योंकि यही जिंदगी है और यही जिंदगी हमको छोड़ के जानी है, और इसीलिए लोग याद रखेंगे इसी चीज को, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। तो मेरे ख्याल से उसने जो किया है, लोग तो जैसे सबको तो एक दिन जाना ही है, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं हम लोग को एक दिन जाना है, पर एक देश के लिए अपने कुछ करके जाना, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। हम लोग भी जी रहे हैं, नो डाउट हम लोग भी जी रहे हैं, बट एक जो काम वो लोग करते हैं, जो मार्टियर्स करते हैं, आई थिंक सो दैट इज हैट्स ऑफ टू देम, अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम। दीदी जो आप कह रहे हैं ना कि अब बहुत दिन हो चुका है कारगिल के बाद, एक्चुअली जब कारगिल हुआ था हम लोग ही अपने टीनेज के लास्ट में थे। हाँ। तो लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनके लिए कारगिल वॉर सच में एक कहानी बनते जा रही है। सही बात है। हम मतलब जैसे कैप्टन सौरभ कालिया की
वापस आना, स्क्वाड्रन लीडर आहूजा के साथ क्या हुआ था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो लड़ाई चलती गई, वो हमारे मेमोरीज में आज भी बहुत ताजा है। और जब भी आज भी कुछ भी होता है ना, जैसे 1 साल पहले जब विंग कमांडर अभिनंदन उनके हाथ में थे, तो आई कैन रिमेम्बर कि औद्रिजा और मैं रात भर सो नहीं पाई थी। हमें सिर्फ यही लगा था कि हो सकता है इंटरनेशनल मीडिया को पता है, हो सकता है मतलब डीलिंग चल रहा है, लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज पाकिस्तान, दे कैन डू एनीथिंग। यस, सो सही बात है। लेकिन ये सब जो मतलब हम ये देख के बड़े हुए हैं, बट अभी के जो जनरेशन है वो ये सुन के बड़े हो रहे हैं। तो हमारी सच में यही एम है कि उनके लिए भी ये हीरोज जो है वो लिविंग रहे, जिंदा रहे। बिल्कुल। कि वो भी वो चीज फील करे और उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन ले। क्योंकि जब ये लोग लड़ाई में जा रहे थे, इन लोगों को पता था कि ना हमारे पास इंटेलिजेंस पूरी तरह से है, ना इनिशियल डेज में हमारे पास आर्म्स एमुनेशन सही से है, ना आर्टिलरी सपोर्ट है, फिर भी एक भी यंग ऑफिसर पीछे नहीं हटे। ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे, मतलब हम फौज में जाए या ना जाए, लाइफ में किसी भी सिचुएशन फेस करने के लिए इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होती है। सही बात है, सही कह रहे और हैं। इन लोगों की जो लीडरशिप स्किल्स थे वो कितने उम्र के थे, कैप्टन्स थे, मतलब कितने यंग थे, हाँ जी, हमसे young थोड़े ही हैं। ज्यादा बड़े थे। हम लोग हाँ। तब इतने आराम से अपने घर में बैठे थे पापा के सेफ्टी में, और वो लोग वहां पे इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रहे थे लड़ाई का। तो वो भी एक सही बात है, लर्निंग है हम लोगों के लिए। एक्चुअली वही बात है, जब मेरे ख्याल से जब मुसीबत आती है या फिर जब मालूम होता है कि हमें कुछ करना है देश के लिए, या आई थिंक ऑटोमेटिकली एक चीज वो आ जाता है लोगों में, उस यूथ में आ जाता है। बट वही बात है कि अभी भी हम लोग के यूथ में अभी भी हम लोग को एक क्रिएट करना पड़ेगा कि इट्स नॉट ओनली द वॉर इज ऑन एवरी फ्रंट। ये नहीं कि हम लोग को सिर्फ अपने दुश्मन से लड़ना है, वॉर हम लोग का देश में जिस तरह से चल रहा है सिचुएशन, वी आर एट वॉर ऑन एवरी टाइम, सो इट इज फॉर द यूथ टू टेक अ स्टेप हर चीज के लिए। अभी जैसे हम जिसपे भी बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है इसमें, ये नहीं कि कोई आकर्षित करेगा, ये बात नहीं है। इसीलिए सभी को अपना एक मतलब ये सोचकर कि अगर मैं करूंगा तो शायद और एक जुड़ जाएगा और एक जुड़ेगा, तो इसी से कारवा बढ़ता जाएगा, बात वही है। तो मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं कि लोगों ने सुनकर बड़े, अभी जो जनरेशन वो सुनकर बड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि क्या है कारगिल वॉर, ऐसा तो हो गया है, ऐसा कुछ मतलब होना था सो हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर ऑलवेज, बट जो सैनिक अभी भी फ्रंट पर है, जो डेली कुछ ना कुछ उन लोग को, हम लोग को तो बहुत सारे न्यूज में पता भी नहीं चलता है, बट दे आर ऑलवेज फाइटिंग, दे आर ऑलवेज एट वॉर, है ना। कितना सतर्क रहना पड़ता है उनका, सारा फैमिली छोड़कर, पेरेंट्स को छोड़कर। अभी तो जैसे हम लोग भी बहुत सारे अभी भी मदर्स ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग अपने बच्चों को डिफेंस फोर्स में नहीं जाना देना चाहते, बिकॉज उनको लगता है कि अनदर वॉर एंड दे विल लूज। बात वहां पर आ जाता है। पर हम लोग तो मतलब हम लोग वही कहते हैं कि चलो अगर कोई रेडी है मतलब वॉर ऐसे फ्रंट पे जाने के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नॉट ओनली एज अ डिफेंस पर्सनल, बट किसी भी तरह से अगर कुछ कर सकते हैं तो इट्स रियली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है एक्चुअली उनकी तरफ से। अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि अभी तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं होने देना चाहिए। हाँ, किस प्रोफेशन से आप रोकेंगे? क्योंकि एज ए टीचर हम लोग ये फेस करते हैं, बच्चे 10 के बाद क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत ही रेयर तो स्कूल में भी हमारे पेरेंट्स डॉक्टर होने से भी रोकना चाहिए, वहाँ भी लाइफ रिस्क बहुत ज्यादा मतलब अभी हमें दिख रहा है। सही बात है, वही बात है, मतलब हमने कभी फील नहीं किया, वो तो हम बीमार होते हैं, हम जाते हैं, वो करते हैं, बट अभी तो हमें मतलब पता चल रहा है कि कैसी बीमारी हो सकती है जिसमें डॉक्टर्स को भी क्या फेस करना पड़ रहा है। They are the soldiers in white uniform, that's all. They are the soldiers in white uniform. So they are doing what, like basically इतना सारा हो रहा है जो कंडीशन है, सिचुएशन, अगर वो लोग नहीं होते
तो शायद इतना संभाल नहीं पाते हमारे देश का, जितना भी अभी हर एरिया में, हर स्टेट में देखा जाए। तो अगर ये लोग ये नहीं होते तो मेरे ख्याल से मुश्किल होता। तो एक तरफ से अंकल, हाँ जी, अंकल वाज टेलिंग कैप्टन जिंटू गोगोई का रिंग सेरेमनी हो गया था बिफोर गोइंग टू द वॉर। यस एक्चुअली जिसके साथ हुआ था अंजना, तो वो लोग हमारे एक्चुअली वो लोग एयरफोर्स एरिया में, उसके भी पेरेंट्स एयरफोर्स में ही थे, सो वहीं से जान पहचान हम लोग की हुई थी। उसके बाद दोनों ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, और उसके बाद फिर वहीं से मेरे ख्याल से उन लोग की फ्रेंडशिप थोड़ी ज्यादा उनकी फ्रेंडशिप हुई, और फिर फाइनली व्हिच मंथ रिंग सेरेमनी हुआ था दीदी? दैट वाज इन द मंथ ऑफ 1st of May. अच्छा, जस्ट रिसेंट, जस्ट बिफोर द वॉर, just one month के गैप में ही। and the best part of that, she still keeps in touch, and उसका एक बात अच्छा है कि वो जैसे उसके कभी भी, जैसे जब जन्मदिन हो या फिर उसके जिंटू का बलिदान दिवस हो, तो मतलब जैसे कोशिश करती है कि फोन करने के लिए, या फिर कभी कभी गुवाहाटी आने से मिलने की कोशिश करती है। तो शी इज इन टच विद अस, एंड कोइंसिडेंटली ऐसा भी, हाँ जी, हाँ दीदी आप बताइए दीदी। नहीं, वो मतलब कोइंसिडेंटली ऐसा है कि मतलब उनकी बेटी, जो छोटी वाली बेटी है, और जिंटू का बर्थडे ऑलमोस्ट एक ही दिन है, 21 नवंबर। So I think जिंटू गोगोई थे ही ऐसे, इतने जिंदा दिल, इतना प्यारा कि उनको मतलब it is difficult to forget him. That's true. I think anybody who had met him will never forget him. That is for sure. उसका मतलब एक that was his trademark. The moment he used to meet anybody, मैग्नेटिक पर्सनालिटी। it was like everybody, because he was so simple and it was very easy to get into conversation. उसका कोई वो नहीं था कि ये मैं बड़े हैं, ये छोटे हैं, या फिर ये बूढ़े हैं, या फिर मैं ऑफिसर हूँ, मैं क्यों बात करूँ। तो वो घमंड नहीं होने की वजह से आई थिंक ही कुड कनेक्ट टू एवरीबॉडी, जो कि आजकल के मतलब बहुत जरूरत है हम लोगों को। दीदी आप तो कह रहे थे ना, मैं मतलब एक पर्सनल ये शेयर करती हूँ, पर्सनल सिचुएशन की। उस टाइम कारगिल वॉर चल रही थी, तो जस्ट उसी दिन शायद एक न्यूज आया था अबाउट आर्टिलरी कैप्टन पीवी विक्रम कि उनकी हार्ट अटैक हो गया था, और वो वॉर फ्रंट में खड़े होकर प्रोजेक्टाइल कैलकुलेशन कर रहे थे फॉर द आर्टिलरी फायरिंग, और उसी बीच में he got injured and then murdered. और मैं अपने घर में बैठ के गर्मी में सारे दरवाजा खिड़की बंद करके आराम से प्रोजेक्टाइल की ही प्रॉब्लम कर रही थी, क्लास 11 में थी, और एक ही प्रॉब्लम में मैंने 3 गलतियां किया था। तो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि अगर आज के न्यूज़पेपर तुम देखोगे तो वो लड़का तुमसे कितना बड़ा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 5 साल का ही बड़ा है, और स्टैंडिंग इन वॉर फील्ड अगर वो एक भी गलती करता है तो वो देश को भुगतना पड़ता है। And you people are staying in a comfort zone and you are doing such a silly mistake for 3 times. It was the practical learning and very small, very big practical learning from Kargil war. That's true. That's true. Kargil heroes, and I mean every one of them taught us so many things. Through their life and through their valor, we are really grateful to them. That's very true. I mean, that's why it's like actually, "ए मेरे वतन के लोगों," that song had a that meaning. Actually, we had heard it so many times, but I think so after that Kargil war, especially the martyrdom of my brother, I think so that song was something, the moment we used to hear it, it used to bring tears to our eyes. Never thought that song is it was written. See, the thing was that it was written long time back, and then we just used to listen, very a nice song and patriotic song, this and that. But then when this Kargil war, and then when you lose your own somebody, and reaching that martyrdom, each and every word had a meaning. Then we understood what does it mean, how this कैसे ये जवान, हम लोग होली दिवाली सब मना रहे हैं और वो लोग अपना वहां पर खड़े होकर गोलियां झेल रहे हैं। तो वही बात है। यहाँ दीदी ये भी हम बोलने, आई वांट टू टेल दैट
सिर्फ वो, he was trained to be brave, he was trained to be strong, पर आप उनके परिवार जो करेज, जो ब्रेवरी, जो डिग्निटी डिस्पाइट द लॉस दिखाते हैं, वो कुछ अलग ही होता है। आप लोगों को तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं होता है इतना बड़ा दुख सहने के लिए, उसके बाद भी यू ऑल आर स्टिल शेयरिंग हिज स्टोरीज विद सो मच ऑफ डिग्निटी एंड ग्रेस। दिस इज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग। Because I think for us, he is never gone, for us, because every हम लोग जैसे भी वो बाहर में जब भी रहता था तो we used to celebrate his birthday, so अभी भी सेलिब्रेट होता है उसके नाम पर, हम लोग बर्थडे केक काटते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, so it's like he's still there with us, so हम लोग अभी भी we don't miss him as such in the sense like in the but in fact then, अभी जो भी हम लोगों को असम में और बाहर भी जाने से अगर कोई हम लोग को पहचानता है तो एक्चुअल वो चीज भैया ने हम लोगों के लिए अर्न किया था। The respect that we are getting now is all because that he earned for us, and we are like privileged to have that। वो अभी हम लोगों को लोगों से जो मिल रहा है प्यार और सम्मान, वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसा कभी कोई मोमेंट है ही नहीं कि हम लोग कभी इस चीज को मतलब सोचे कि भैया नहीं है हमारे साथ, मतलब ही इज ऑलवेज देयर बिकॉज एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ हिम। और असम में और उसके फ्रेंड्स जितने भी हैं, तो ईच एंड एवरीवन इज सो प्राउड ऑफ हिम। सब चाहते हैं कि असम में आकर के एक बार उसकी समाधि पे आकर के देखें उसको, बट ये है कि अभी पॉसिबल नहीं है, काफी दूर भी हो जाता है कई लोगों के लिए। बट ये अच्छा है कि उसका अपना जो पेज है उस पे आकर के लोग फिर भी अपनी बातें बताते हैं या चाहते हैं कि वो लोग आए और उसको करें। वो बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी समाधि पे पूरा खुद से मम्मी अभी भी साफ सफाई करती है और डेली इवनिंग वहां जाकर के दिया जलाती हैं। एक भी दिन मिस नहीं होता है भैया के वहां पर, तो वो मम्मा के लिए अपना टाइम होता है भैया के साथ। यस, ये माँ होती है। डेली इवनिंग का ये मम्मी का एक रहता ही है रिचुअल। That's the time auntie spends with her son. Yes. Absolutely. Yes. Didi, already you have given message to our young generation. Still, मैं आपको एक बार पूछूंगी, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो यंग जनरेशन है उनको, हम अंकल और आंटी से भी सुनेंगे। Exactly, स्पेशली अंकल से तो सुनेंगे जरूर। हाँ, क्यों नहीं। मतलब यंग जनरेशन तो क्या है, ये ऐसा जनरेशन है जिनके पास एनर्जी है, एक बबलीनेस है, और ऐसा ये जनरेशन ऐसा है कि जो वो अगर सोच ले कि हम लोग कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी करो अच्छे के लिए करो, ताकि खाली एक समाज नहीं, सभी समाज के सभी हर कोने में उसका इम्पैक्ट हो, ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम लोग अपने देश के लिए कर रहे हैं। और जो क्योंकि परिवार तो है ही, पर परिवार से बड़ा हमारा अपना देश है, तो वो देश के लिए हम क्या करके जा सकते हैं, वो चीज हमारे लिए हमको याद रखना है। अगर हम लोग अगर किसी एक को भी मोटिवेट कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, अगर हम एक लड़की को अगर ये मोटिवेट कर सकते हैं, हाँ तुम फाइट बैक कर सकती हो, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, तो आई थिंक इससे बड़ा चाहे और इससे बड़ा और सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। अगर कहीं पर भी हम एक क्राइम को स्टॉप कर सकते हैं लड़कियों के अगेंस्ट में या किसी के भी अगेंस्ट में, तो फिर एक हिसाब से हम लोग एज ए यूथ दे आर द पावर। इसीलिए दैट इज व्हाई Honorable Prime Minister always says India is a young country, and we are having a lot of young. That the reason is we are because of this young generation, and generation Z जो आ रहा है, the Zoomers जो आ रहे हैं, and they can do a lot. I think so. Now the message is they also know, and they are doing also. It's not that they are not doing; they are doing. But वही है थोड़ा सा इसमें सभी को भाग लेना। yes. दीदी थोड़ा अंकल से थोड़ा सा हमारी यूथ के लिए मैसेज। Yes. Thank you so much from our side. Yeah, and thank you, Advita. No, we must thank you for that time. Thank you so We much. love Thank you. listening Exactly, to you Didi. both. Thank you. It's our honor to have you all Yes. to listen about Captain Jinku Gogoi.
Yeah, I know, because And we obviously your thoughts also. the things are like it is never ending. It will never end. We can keep on talking about him, True. but I think so. We need to, sometimes maybe later on we can speak about him. Yes, we will again Okay, Absolutely, sure. make out some absolutely. time to. Yeah. Why not? Maybe once COVID situation gets all right, maybe you can Yes. all come down to Yes. Assam and Absolutely, be absolutely. with us. Sure, Didi. Thank you so Sure, much. we will. Yeah, over to my father. Over to my father. Yes, Didi, Sure. yes. अंकल आप थोड़ा सा हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए एक मैसेज प्लीज आप दीजिए कुछ मैसेज. Actually, I wanted to tell to the young generations. First, I'll give you a small description about his reaching to the top of the Kalapathar. Yes, yes, How, please. how they have reached to the Kalapathar hills top. Captain Jentu Gogoi, he was given the task to evict the Kalapathar hills. That is almost 16,000 feet height. Batalik sector. So, Yes. yeah, Batalik subsector. And going to that Kalapathar, there is no vegetation. So they have to climb only through the rocks and stones and all. It is, and that particular night on 29th and 30th night, it was a moonlight night. And any movement from the front, they used to see and they would fire immediately. And that eviction of Kalapathar, they have given the task. A company was given to Captain Jintu Gogoi, and they have moved up, but they faced 2-3 times firing also. Then they used to hide for about 15-20 minutes, and actual attacking time was given somewhere 7:10. But these young boys, they have reached about 10 minutes earlier. Say about 10 o'clock, I mean, sorry, 7 o'clock they have reached there. So he has asked all the boys to take rest for about 10 minutes. And it was snowing that particular time, that particular height. And since it was snowing, they have not seen anybody who is standing here and there. Suddenly that snowing stopped. And immediately he has seen in front of him 3 men standing. And he could imagine immediately that why they are standing there. That is definitely a bunker is there, and bunker, some officers are sleeping there. So he had his inches rifle. Immediately he has killed those 3 people, and they have gone inside the bunker. So 3 men they have seen sleeping, but they have not used the gun that time. With kukri, they have slashed all the 3 officers. And he thought definitely somebody more is there in the backside. Instead of again coming back to the front side, they have gone to the backside. And since it was a morning, early morning, hearing that 3 fire shots, the other people, they have come up. And when he has gone to see the rear side, they have seen that from 3 sides they have been attacked. They have been surrounded. And he has been asked to surrender. But he told that Indian army में surrounding का कोई शब्द है नहीं. There is no words of surrounding Indian army. And again they have fought, but then since it is that firing was from the tree front, and what they have done is he has asked other people to take shelter. So immediately he has got the first shot he has got at the leg. That is on the right leg he has got. And again he has gone back for safety. And that second bullet has come and it was hit on his stomach. And still they were retreating. And he has seen, by then he has given the complete data to that bottom, that is to the
Yes. their bottom line, base, Yeah. that Yes. who are all, who said how many people are there. That complete information was given. And third bullet has come, that was the fatal. And actually, what their Jawans they are telling, that Subedar Major, he say साहब ने वो पूरा पीछे देखा था कि इन लोगों ने सभी शेल्टर लिया कि नहीं, तो वो जो सिर उठाया ना, and उसी सिर पे लगा है, that was the third bullet, and that was the fatal. And it so happened that he has fallen down other side of the line of control, and that is one of the reasons that his dead body was not able to pick up that particular time. So, and that one thing, that it is not Captain Jindu away, it is the duty of officers or the JCOs, those who are there. The front position has to be detailed to the bottom, detailed to the base camp. That is one of the most important thing. And he has given full details. And finally, that Kalapathar was taken over on the third or fourth day. And as a matter of fact, because of this, he was honored with a Veer Chakra, you know it very well. And the state government also has honored him with a Mahavir Lasit Borphukan Award and Mahavir Chilarai Award. And this is a great honor for us. बाकी जो चीज है, that already you have been seeing it, but then for young generations, it is time for them to come up. And to be very frank, there are a word is rather it is very rare. It is after 71 word, this is a 99 word. That it is a big gap. It's a big gap. But I wanted to tell you one thing, that Honorable Prime Minister Bajpayee, he has taken a very good step. I don't know whether it is accounted from your side or not. The total number of dead bodies has been sent by him to the individual house. This is the first time that is any Prime Minister, he has done this great job, that all the dead bodies, whether it is civilian or defense personnel, everybody's home, that dead body has been sent. Otherwise, earlier, only we used to send the ashes. This is the first time he has taken step. Yeah, and this is still continuing. It's a great job that one of the Prime Ministers, he has shown it. The other Prime Ministers, they are doing it. Auntie, you are our inspiration. We get inspired from you. आपसे हमको हिम्मत मिलती है, आपसे हमको सीख मिलती है कैसे बच्चों को बड़ा करना है. हम भी so माँ much. हैं, तो आप जैसे माँ हमारे इंस्पिरेशन है आंटी. जरूर बेटी जरूर. अभी थोड़ा बेटा को वही है ना, आर्मी जाने के लिए बहुत बिल्कुल नहीं आंटी, बिल्कुल बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं किया. मैं बोला जाओ, देश के लिए अभी जाना है, तभी तो नाम रहेगा अभी सबका. आप भी अच्छा से रहिए बेटी, हमारा आशीर्वाद है. Uncle, we know it is so difficult for you to tell what you have told today, but you have been so strong and so brave. और आपने आज हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जो हम लोगों को पहले पता नहीं था. Thank you so much for putting us in the limelight, and it is a great job that you have done, and we are proud for you also that you have been doing a great job for all the martyrs families. Thank you so much. टाइम मिलेगा तो जरूर आइए बेटी. बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूर भी नहीं है, हम आएंगे. वही तो, ज्यादा दूर तो है नहीं ना, आइए जरूर. Here everybody knows Captain Jindu Go's house. Yes.
Please come down at any time. Only you have to give me information about 2-3 days Sure. early. Beautiful. Kaziranga is very near to us. Oh, great. Thank you very much. So we are here at the concluding session of today's Vartalap, and we are really grateful to Uncle and Auntie for sharing their memories and share thoughts with us. And we want to convey our thanks to Didis also, who also shared their sibling memories with us, and they really cited the example of the bravery of themselves also. It is not very Right. easy to face this loss with such dignity and grace. So, and with this note, today we will end our Vartala with our respect and gratitude for all the martyrs of 17 Gadwals and to all the war heroes who have fought the war for us. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you very much. Our blessings Thank are you. always there with you. Pranam, Uncle. Pranam, Auntie.